Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here, and now we are going to get discuss about the transistor as an amplifier. Okay, so transistor as amplifier. So this is the circuit diagram of this NPN transistor as a common emitter, like this. This is the input resistance RB, that is denoted small r, and here current will flow is IB. This is VBB, and we can also say that this is the input voltage. Okay, this is B region and this is C, and where IC current will flow, and here also attached the output voltage RL or RC. This is output voltage and this is VCC source, whatever we applied in the output. So here the potential drop is VBE, and here the potential drop is VC. Okay, so whenever it operates in the active region, then it will works as an amplifier. So you know that these are the two specific conditions. VI is equals to VBB is equals to VBE plus IB RB, and V naught, that is equals to VCE is equals to VCC minus IC RC. Okay, so whenever transistor operates in the active region, just like this, this is the V naught and VI, and it is the active region. So particular, this is the slope which will be negative, means it is change in delta Vi, and this is delta Vi V naught, and this is delta Vi. So this is the amplification. That means AB is equals to delta V naught upon delta Vi, and this is in the negative curve. So the slope will be negative. It means it will be negative. So whenever transistor operates in the active region, then it is used as the amplifier, and its slope will be equal to the amplification, voltage amplification, and that is equal to the ratio of output change in small change in output voltage and small change in input voltage. This is the voltage amplification. Okay, and that will be negative, as shown in this curve. The slope will be negative. Okay, so whenever it operates in the active region, then transistor works as an amplifier, and in the V naught Vi curve, its slope will be negative, or we can say that small change in output voltage, means the ratio of small change in output voltage and small change in input voltage will be equal to the voltage amplification. So what will happen? So let me consider here by equation. फर्स्ट डेल्टा वी आई, यानी पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन के लिए देखते हैं यहाँ पर इनपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा वी आई. सो इसके लिए दो कंडीशन होगी, पहले वी आई 1 और सेकेंड बार अटेम्प्ट वी आई 2. सो इसके लिए हम दो कंडीशन यूज करेंगे. सो डेल्टा Vi2 माइनस Vi1, और Vi2 क्या होगा? तो देखिएगा यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी VBE2 प्लस IB2RB माइनस VBE1 प्लस IB1RB. आरबी जो होगा फिक्स वैल्यू होगा, करंट वैल्यू इसकी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर वीबी और VBE1 और VBE2 ये चेंज हो रहे हैं. तो देखिए इनको एक साथ लिख देंगे, डेल्टा वी आई इज इक्वल टू VBE2 माइनस VBE
1 प्लस IB2 माइनस IB1 RB। तो हम इसको लिख देंगे डेल्टा VBE और इसको लिख देंगे डेल्टा IB RB। और ये टर्म जो है इसके कंपैरिजन में बहुत स्मॉलर है, डेल्टा VBE लेस देन डेल्टा IB RB। इसकी कंपैरिजन में ये टर्म स्मॉलर है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, नेग्लेक्टिबल कर दिया। ओके, सो ये आ जाएगा डेल्टा VI और इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा IB RB। देखिएगा, एक बार रिपीट करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन से हम सॉल्व किया, एक बार इसकी वैल्यू 1 तो यहाँ पर 1 और ये करंट 1। सेकेंड अटेम्प्ट ये I2 हो जाएगा VI2, सो VBE 2 IB2 RB दोनों को हमने माइनस कर दिया क्योंकि चेंज निकालना है, तो ये वैल्यू माइनस ये VBE वाले टर्म एक जगह और IB RB वाले टर्म एक जगह। सो ये आ जाएगा डेल्टा VBE और ये आ जाएगा डेल्टा IB RB दोनों में कॉमन। अब इसकी कंपैरिजन में डेल्टा VBE इज स्मॉलर वैल्यू, देयरफॉर इट विल नेग्लिजिबल, देयरफॉर डेल्टा VI इज इक्वल टू डेल्टा IB RB। ओके, सो नेक्स्ट कंडीशन इसके लिए हो जाएगा बाय इक्वेशन 2। सो डेल्टा V0 क्या होगा, V0 2 माइनस V0 1। तो इसकी वैल्यू देखिएगा VCC माइनस IC2 RC माइनस VCC IC1 RC। VC वैल्यू जो है VCC ये फिक्स वैल्यू होगी, सो डेल्टा V0, सो डेल्टा V0 इज इक्वल टू माइनस IC2 RC प्लस IC1 RC। सो RC कॉमन ले लें और माइनस, सो IC2 माइनस IC1 डेल्टा V0, सो डेल्टा V0 विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा IC RC। ये आउटपुट वैल्यू आ गई। ओके, इसको हमने थर्ड कंडीशन मान ली इक्वेशन और इसको फोर्थ इक्वेशन मान लिया। ओके, सो नाउ you know that the amplification value AV is equal to delta V0 upon delta VI, so its value is equal to minus delta IC RC upon delta IB RB। so IC upon IB, delta IC upon delta IB is equal to beta current gain, so voltage amplification is equal to minus beta RC upon RB। and you know also RC is just equal to R load and RB is equal to R input small r, so that amplification, voltage amplification is equal to minus beta RL upon small r। okay, so by equation first and second, here we calculate the small change in input voltage delta Vi and small change in output voltage, and after that we will use this formula voltage amplification AV is equal to delta V0 upon delta Vi, and here putting the both value, beta is equal to delta IC upon delta IB, so it is equal to minus beta RC upon RB, and if RC is equal to load resistance and RB is input, that means smaller, so that voltage amplification will be equal to minus beta RL by R। so in this way this transistor used as the amplifier।